morning students. Now today we will see our page number 88, exercise 5.11. In this exercise 5.11, total 10 word problems are given. So you have to write down this problem and then solve this problem in your notebook. So we will see the first problem. A car has 4 wheels. एक कार को कितने व्हील होते हैं? 4 wheels होते हैं. How many wheels will be required for making 150 cars? अगर हमें 150 cars तैयार करने हैं तो कितने wheels बनाने पड़ेंगे? So in this example we have to do the multiplication. So what we will do? We will multiply 150 into this 4. Okay. So do the multiplication. 4 multiplied by 0, 0. 4 5s are 20. What you will write here? 2. What is the carry? 2. 4 1s are 4. 4 plus 2, 6. So what is our answer? 600. So we have to write down the last statement. So we will require 600 wheels. Okay, so in this way you have to write down in your notebook. Now see second question. A bed sheet cost rupees 489. एक बेड शीट की कॉस्ट कितनी है? 489 रुपीज है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 48 बेड शीट्स. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 48 बेड शीट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कितने रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे तब जाके हमें 48 बेड शीट मिलेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो 489 multiplied by 48. So in each separate box you will write this separate number. Then only your answer will be correct. Otherwise your answer will be wrong. Okay. Now start multiplying. 8 9s are 72. So write down here 2. What is the carry? 7. Okay. 8 8s are 64. 64 plus 7, how much? 71. So write down here 1. What is our carry? 7. Then this 8 4s are 32. 32 plus 7, 39. So write down here 39. Okay. First you rub these cans. Then you write down our compulsory 0. Okay. Then only start the second multiplication. 4 9s are 36. So write down 6 here. And what is our carry? 3. 4 8s are 32. 32 plus 3, 35. So write down here 5. What is the carry? 3. 4 4s are 16. 16 plus 3, 19. So write down here 19. Now add these two numbers. 2 plus 0, 2. 6 plus 1, 7. 9 plus 5, 14. What is the carry? 1. 3 plus 1, 4. 4 plus 9, 13. What is the carry? 1. 1 plus 1, 2. Okay. So what is our answer? 23,472 is our answer. So you can write here. So rupees 23,472 is the cost of 48 bed sheets. So everything as it is
you have to write down in your notebook. Now see third question. A bus carries 56 passengers in one trip. एक बस होती है, उसमें कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं? 56 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं एक बार अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है इन वन ट्रिप, है ना। अगर समझो कोई बहुत बड़ी सिटी है और अगर समझो किसी को एक जगह से बहुत दूर स्टेशन तक जाना है तो वो एक टाइम पे 56 पैसेंजर्स लेकर जा सकते हैं। हाउ मेनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन 24 ट्रिप्स? अगर एक ट्रिप में वो 56 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, तो अगर वो बस ने 24 ट्रिप्स किए तो कितने पैसेंजर्स को वो ट्रैवल करेंगे? तो व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू डू हियर मल्टीप्लिकेशन। So 54 multiplied by 24. Do the multiplication. 4 6 are 24. So write down here 4, carry is 2. 4 5 are 20. 20 plus 2, 22. Okay, first rub this carry. Then write down compulsory 0. 2 6 are 12. What is the carry? 1. 2 5 are 10. 10 plus 1, 11. So write down here. Now do the addition. 4 plus 0, 4. 2 plus 2, 4. 2 plus 1, 3. This one as it is. So we can write down the last statement. So it carries 1344 passengers. We can write down like this. So everything as it is you have to write down in your notebook. Now see fourth example. How many seconds are there in 95 minutes? So in 1 minute how many seconds are there? 60. So you write down there 1 minute equal to 60 seconds. So what we have to find out? We have to find out how many seconds are there in 95 minutes. Okay, so 95 multiplied by 60. Okay, so each number you have to write down in each separate box. So we will start multiplication. 0 multiplied by 5, 0. 0 multiplied by 9, 0. Then what we have to do? We have to write down here compulsory 0. 6 5 are 13. So write down here 0. What is the carry? 3. 6 9s are how much? 54. 54 plus 3. 57. Now add this. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. This 7 as it is. This 5 as it is. So what is our answer? 5700. So there are 5700 seconds in 95 minutes. So everything as it is you have to write down in your notebook. Now see fifth question. Ravi earns 345 rupees in a day. रवि नाम का एक इंसान है जो 345 रुपीस एक दिन में कमाता है. हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 31 डेज? तो
उसको अगर एक दिन में 345 रुपीज़ मिलते हैं तो 31 डेज में कितने रुपीज़ मिलेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू हियर मल्टीप्लिकेशन. सो 345 multiplied by 31. Now we have to do the multiplication of 345 multiplied by 31. Okay. So 1 5 is 5, 1 4 is 4, 1 3 is 3. Okay. Now give here compulsory 0. 3 5 is 50. So write down here 5. Carry is 1. 3 4 is 12. 12 plus 1 13. So write down here 3. Write down here carry 1. 3 3 is 9. 9 plus 1 10. Now do the addition. 5 plus 0 5. 5 plus 4 9. 3 plus 3 6. This 0 as it is, this 1 as it is. So what is our answer? 10,695. So to write down last statement. So he earns rupees 10,695 in 31 days. So complete this in your notebook. Now see sixth example. The expenses for a picnic are rupees 255 for each student. अभी स्कूल की पिकनिक जा रही है तो एक स्टूडेंट का जो भी पिकनिक के रुपीस हमें देने पड़ेंगे वो है एक स्टूडेंट के लिए 255 रुपीस. इतना खर्चा आएगा पिकनिक के लिए. तो व्हाट वुड बी द टोटल एक्सपेंसेस फॉर 85 स्टूडेंट्स. अगर स्कूल के समझो 85 स्टूडेंट्स को पिकनिक को जाना है और एक स्टूडेंट को रुपीज़ 255 खर्चा आने वाला है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है. ऐसे 85 स्टूडेंट को कितने पैसे लगने वाले हैं, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना खर्चा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 255 multiplied by 85. Do the multiplication. 5 5 is 25. So write down here 5. Write down here carry 2. 5 5 is 25. 25 plus 2 27. So write down here 7. Carry is 2. 5 2 is 10. 10 plus 2 12. So you write down here 12. You first rough these carries. Then write down compulsory 0. Then start multiplication. 8 5 is 40. So write down here 0. Carry is 4. 8 5 is 40. 40 plus 4 44. So write down here 4. Carry is 4. 8 2 is 16. 16 plus 4 20. Now do the addition. 5 plus 0 5. 7 plus 0 7. 4 plus 2 6. 1 plus 0 1. These two as it is. So what is our answer? 21,675. So the last statement we can write. So rupees 21,675 is the total expense.
for 85 students. So everything as it is, write down in your notebook. Now see seventh question. If one roll of paper weighs 92 किलोग्राम, एक पेपर जो हमारे घर में आता है ना, न्यूज़पेपर रोज सुबह में, तो उसका जो एक रोल है उसका वजन, उसका वेट है 92 किलोग्राम्स। इतना वजनदार होता है वो। पेपर वाला क्या करता है, फिर हर एक घर में एक एक पेपर ऐसे बांटते जाता है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 100 सच रोल? अगर एक पेपर रोल का वेट है 92 किलोग्राम, तो ऐसे 100 पेपर रोल का वेट कितना होगा? So what we have to do? We have to do here multiplication. 100, we will write 100 here. 100 multiply by 92. I am drawing here these boxes, that you have to also write down each number in each separate box. 2 multiplied by 0, 0. 2 multiplied by 0, 0. 2 ones are 2. Now write down compulsory 0. 9 multiplied by 0, 0. 9 multiplied by 0, 0. 9 ones are 9. Now add this. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 2 plus 0, 2. This 9 as it is. So total weight is 9,200 kilogram. So in this way also you can write down in your notebook. Now see 8th question. Raja bought 19 sheets priced at rupees 175 each. राजा नाम का एक लड़का है जिसने 19 शीट्स लेकर आया है, जिसकी एक शीट की प्राइस है 175 रुपीज़। ऐसे बड़े बड़े शीट होते हैं ना, जिसपे हम लोग चार्ट बनाते हैं स्कूल में, तो वैसे ही कुछ उसी टाइप के शीट्स होंगे जिसकी एक शीट की प्राइस है 19 sheet priced at 175 each. So find the total amount he spent. Okay, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन 175 multiply by 19. So do the multiplication. 9 5s are 45. 5 we have to write down here. 4 is the carry. 9 7s are 63. 63 plus 4, 67. What is the carry? 6. 9 ones are 9. 9 plus 6, 15. First you rub this carry, then write down compulsory 0, and then start multiplication. 1 5s are 5, 1 7s are 7, 1 1s are 1. So write, now do the addition. 5 plus 0, 5. 7 plus 5, 12. Carry is 1. 5 plus 1, 6. 6 plus 7, 13. What is the carry? 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. So what is our answer? 3,325 rupees. So he spent rupees 'So write down in your notebook. Now see 9th question. Find out the total length of the ribbon that would be required for 18 girls.
रिबन पता है जो हम लोग बालों को लगाते हैं, तो ऐसे रिबन हमको कट करने की है। इफ ईच गर्ल नीड्स 103 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 103 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक गर्ल को अगर 103 सेंटीमीटर रिबन चाहिए तो 18 गर्ल्स को कितनी चाहिए, कितनी हमको ये करना पड़ेगा। सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट कितनी रिबन हमको लगेगी। सो 103 मल्टीप्लाई बाय 18, now do the multiplication. 8 3s are 24. So write down here 4. What is the carry? 2. 8 multiplied by 0, 0. 0 plus 2, 2. 8 1s are 8. First you rub this carry. Then write down compulsory 0. 1 3s are 3. 1 multiplied by 0, 0. 1 1s are 1. Now do the addition. 4 plus 0, 4. 3 plus 2, 5. 8 plus 0, 8. This one as it is. So what is our answer? 1854. So find out the total length of the ribbon. So how much? 1854 centimeter will be required. (1854 centimeter ribbon. You write down here ribbon will be required. Okay, so write down in your notebook. Now see 10th question. If the price of one teddy bear is ₹136. टेडी बियर सबको पता है, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है टेडी बियर। अगर एक टेडी बियर की प्राइस है 136, सो व्हाट वुड बी 25 सच टेडी बियर कॉस्ट इन ऑल। अगर एक की प्राइस है 136 रुपीज, तो 25 टेडी बियर्स को कितने रुपीज हमें खर्च करने पड़ेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। So 136 multiplied by 25. Now do the multiplication. 5 6 are 30. Write down here 0. 3 is the carry. 5 3s are 15. 15 plus 3, 18. What is the carry? First you rub this carry, then you write down compulsory 0. 2 6 are 12. What is the carry? 1. 2 3s are 6. 6 plus 1, 7. 2 1s are 2. Okay. So 0 plus 0, 0. 8 plus 2, 10. What is the carry? 1. 6 plus 1, 7. 7 plus 7, 14. What is the carry? 1. 2 plus 1, 3. So what is our answer? 3400. So we can write rupees 3400 will be required for 25 teddy bears. So you have to write down total 10 word problems in your notebook.